फुकराज आपके उधर आए थे, मिले थे आपसे? यार तो नहीं आए थे वो। आप डस्के में नहीं रहते? डस्के आए हुए थे। नहीं सर वो नहीं होता। शायद कभी थोड़ा सा करा दिया होगा। हम्म। तो अगर अगर किया होता तो थोड़ा सा मुझे जरूर बताता। हम्म। चलो। गुड मॉर्निंग। Good morning. देखिए सर। All right. How are you this morning? I'm okay. Just the regular stuff. Pain in the back, pain in the head, super dry eyes. So it's like, the 80 years old guy. I know that. Yeah, it's like a life now. So is Good morning, sir. good morning, Maria. Pastor Server going to be here? No, server is not gonna be here. Server is gonna come later. We can start whenever you're ready. All right. Yeah. Maria? I'm Yes, sorry. sir. So Why do are we you have gonna three minutes be, early? there is three kind of charts here. One, Yes, sir. two. Are you gonna be translating, right? Yes, sir. Yes, sir. All right, good. Thank you. You coward. I'm so much tired. All right. Let's I'm open trained. with prayer. Uh, Arun Yavid, what is your name? सर इस अरुण So ये people call मेरे you, जो इस अरुण is Arun your या फिर first name? आदम सॉरी सर. Is Arun your first name? यस सर. Okay. Arun, would you open us in prayer, please? व्हाई नॉट. कादर मुस्तकिल खुदावंद आपके नाम की शुक्रगुजारी करते हैं फिर इस लम्हे के लिए, इस वक्त के लिए, इस क्लास के लिए फिर आपने जमा किया है ताकि हम अपनी निकट बातों को सीख सकें और अपनी जिंदगी में उन बातों को, आपके कलाम को जगह देकर फिर अपने आप को आपकी मुकद्दस खिदमत के लिए तैयार कर अपने सजा कराम के लिए बरकत की दुआ चाहते हैं. आपकी मेहरबानी फिरौन सदा हम कर रहे हैं जो सजा फिरौन आपके लोगों को, तेरे बच्चों को फिरौन तेरी इंजील की मुनादी के लिए तैयार करते रहे. इसी खुदाउन के नाम से मांगते हैं. आमीन. Amen. Thank you, sir. All right. I'm going to share. All right.
We got to Samson last time. And I want to point out something to you. Remember what I told you before? These are the major judges, and there's 6 of them, and there were 6 minor ones. And the minor judges usually just get a verse. And they'll say, Judge so-and-so judged Israel for so many years, and he did this and that. And that's it. It's all one verse. Where these judges get whole stories. Maria, do you want to translate that? Maria? Kenneth, is she not working? He's here, Can you hear me, so sir? no, we can't hear you. Now we can hear. हमने किजात की किताब में जो है समसून तक ये सारा चैप्टर पढ़ा था कि किस तरह से खुदा ने उसे कुव्वत दी और किस तरह से उसने बनी इसराइल को जो है उन सारे लोगों से जो उन पर हुकूमत कर रहे थे छुड़ाया। इसी तरह से हमने हम 6 काजियों के हवाले से पढ़ा था जो कि बड़े काजी मुकर्रर हुए थे और जिन्होंने बहुत सारे लोगों से उनको रिहाई दी। So in Judges, we've had this cycle where Israel turns their back on God and he sells them into the hand of an enemy who oppresses them. And Israel prays and God sends a deliverer, and that's the judge. तो किजात की किताब में हमने ये देखा सारा कि किस तरह से बनी इस्राएल जो है खुदा से मुनहरिफ होते रहे, खुदा की हुक्मतूरी करते हुए उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, दूसरे बुतों की पूजा करते रहे, किस तरह से खुदा ने उनको दूसरी कौमों के हाथ में देते रहे और इस तरह से उन्हें जो मुख्तलिफ काजी आए उनसे उनको रिहाई दी। Now, what we've noticed is that Israel seems to get worse as we move through the Judges, because we're building somewhere. Where the whole point of the book of Judges is building up to something, which is going to come out today. We have 2 more sections in the book of Judges before we reach the end. But look what comes next. We get 1 Samuel, which does have the story of Samuel in it, but it's the story of Saul as king. And then David gets introduced. 2 Samuel is David as king. And then in Kings, of course, we get the other kings. So what we're doing is our author, who, remember, is a prophet. He's an unknown prophet. We don't know his name. Whoever wrote Joshua, Judges, Samuel, and Kings. He's an unknown prophet. And he's judging Israel by means of the covenant and how they've fallen short. And he's building up to a king, Israel having a king. Why would Israel having a king be so important to this unknown prophet writing the book? Translate up to there, Maria. हम देखते हैं कि जो किजात की किताब है ये सारा प्रोसेस जो है हमें किस तरह से ले जा रहा था और इस सारे वाक्य से क्या होने वाला था। इस सारे प्रोसेस में हमने देखा कि उस वक्त तक जब किजात की किताब में काजी आए इंसाफ करने के लिए, उस वक्त तक इसराइल में कोई बादशाह नहीं था, ना कोई मुकर्रर हुआ था। ये सारे काजी आते, इसराइल जो है फिर गुनाह में जाते, फिर खुदा को काजी देखता। तो ये सारा प्रोसेस किसी एक नतीजे की तरफ आने वाला था, क्योंकि इसराइल के अंदर खुदा जो है बादशाह को मुकर्रर करने वाला था। जैसे कि पहले साउल आया, ये हमें पहले सैमुएल की किताब में मिलता है। उसके बाद दाऊद आया, इस तरह से दूसरे बादशाह आते गए और ये मुकर्रर होते गए। यकीनन इसकी तरफ जाने में भी खुदावन का कोई मकसद था। All right. So
this is gonna come out. We're gonna look at these last two sections. And I hopefully am going to point out to you what our unknown prophet is after. I don't like him not having a name. So I call this prophet Ralph. I don't know his name, and Ralph is not a Hebrew name, but it makes it easy to talk about it. Ralph, the author of Joshua, Judges, Samuel, Kings, the prophetic history. Is Ralph. You can name it Kenneth. What? I can You can use Kenneth. Kenneth. All right, Kenneth. Kenneth is our unknown prophet. We'll use him. All right, so we're going to look at Judges 17. There we go. So I'm going to put up the map again because I love my maps, as you know. Oh, there it is. Come on. Fine. So our text says there was a man in the hill country of Ephraim whose name was Micah. Ephraim is this. I try to blow it up a little bit bigger. When they say Ephraim, they're talking about up here. Now, Ephraim is the name of a particular tribe. There we go. There's Ephraim. All right. So it's just, there's Jerusalem and the end of the Dead Sea. So it's just north of Bethel is Ephraim. यहाँ पर जो है हमें ये मिलता है कि किस तरह से जो है बहुत सारे ऐसे भी नबी थे जो कि गुमनाम है, जिनका कोई नाम नहीं, सर ने उनका नाम वापस है, हम उनको इस नाम से बुला सकते हैं ताकि उनको याद रखें। उनका कोई भी नाम का जिक्र नहीं है कि कौन थे, बहुत सारे नबी ऐसे जो है जिनके नाम का जिक्र नहीं। और फिर हम देखते हैं कि किजात की किताब दूसरी 17 बाब के अंदर कि इब्राहिम के कुछ ख्वाहिशाने मुल्क का एक शख्स था जिसका नाम मीका था। मीका जो है वो कहाँ रहता था, ये जो नक्शा सामने दिखाया गया है, ये ग्रीन कलर का जो है इब्राहिम का इलाका है और यहाँ यहाँ का था। Okay. So this guy's Micah. Good Hebrew name. He says mother. The 1,100 pieces of silver that you're missing and about which you uttered a curse, I stole it. And the mother, so hear this. Mother, I stole the 1,100 pieces of silver that you're missing. I stole it. And 1,100 pieces of silver is a lot of money. And he's saying, I stole it. And then the mother said, blessed be my son by the Lord. I want you to see what Kenneth, our unknown prophet, is saying. He's saying things have gotten so bad
that when a son confesses to his mother that he stole her money, she blessed God for it. That's how twisted and upside down society has gotten in Israel. Okay, Maria? तो मिका जाके अपनी माँ से कहता है कि उसने चांदी के 1100 सिक्के उसकी माँ के खो गए थे, वो उसने चुरा लिए, उसने ले ली। अपनी माँ से इस बात का इकरार करता है कि मैंने चांदी के जो 1100 सिक्के थे वो तेरे पास से ले लिए। तो क्या होता है कि जिनके बाबा तूने कहा दानत भेजी थी, और मैंने भी ये सुना कि वो देखकर चांदी के सिक्के मेरे पास है, मैंने उसके ले लिया। लेकिन उसकी माँ ने उसको क्या कहा कि मेरे बेटे को खुदाम की तरफ से बरकत नहीं। अब ये चोरी करने पे माँ से बरकत दे रही है, ये अजीब सी बात है। फिर हम देखते हैं ये जो सिक्कों की जो तादाद है 1100 सिक्के। अब 1100 सिक्के बहुत ज्यादा रकम होती है, बहुत मायने रखते हैं, बहुत बड़ी रकम है। उसने चुराए थे, जिसके बारे में उसने अपनी माँ को बताया कि मैंने चुराए हैं। उस बात का वो कन्फेस कर रहा है, इकरार कर रहा है अपने कि मैंने ये तेरे सिक्के मैंने चुराए। So he gives her the 1,100 pieces of silver back. And his mother says, look what she says. I want you to hear Kenneth. He's not happy. But this is what the mom says. I dedicate the silver to Yahweh from my hand for my son to make a carved image and a metal image. Oh, I'm so happy my son gave me my silver back. Let's make an idol. Let's make an image. They do not know the law at all. The very first commandment is you will not make an image. And they don't know that. And that's Kenneth's point. They do not know the law. Now, therefore, the mother's talking, I will restore it to you. So when he restored the money to his mother, she took 200 pieces of silver, gave it to a silversmith, who made a carved image and a metal image. So I want you to see this. The teaching of the law is the job of the priest, not the prophets. That's the priest's job. And they have failed miserably. Nobody knows the law. This mother thinks she is worshiping Yahweh, honoring Yahweh by violating the very first commandment and building this, having this image made. And that's Kenneth's point. No one in Israel knows the law. Maria? यहाँ पर क्या होता है कि वो जो सिक्के उसने दिए थे उसको लेकर अपनी माँ को दिया, तो यहाँ पे तो उसने हुक्म दिया कि गुनाह किया, नाफरमानी की, चोरी। लेकिन उसने माँ ने जब उसने वापस किए तो बजाय उसको तालीम देने के उसने कहा कि ये चांदी के जो सिक्के हैं उसका हम क्या करते हैं, उसका एक बुत बना लेते हैं। उसने अपने बेटे को एक मुबारकबाद दी, उसने उसे बरकत दी। उसने कहा कि चांदी के वो 1100 सिक्के अपनी माँ को फिर दे। जब उसने अपनी माँ से कहा मैं चांदी को अपने बेटे की खातिर अपने हाथ से खुदा के लिए मुकद्दस किए देती, ताकि वो एक बुत खुदा हुआ और एक ढाला हुआ बनाए। तो अब मैं उसको तुझे फेर देती हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी माँ ने जो है वो उसे खुदा के लिए मखसूस किया और उसे कहा कि यानी कि इन पैसों से जो है खुदा हुआ जो है बुत बना ले। अब बुत बनाना, छवि बनाना बाइबल के हिसाब से तो एक गुनाह है, लेकिन यहाँ पे कोई कानून हमें नजर नहीं आता है ना। कानून की कोई भी अमल दरामद उस पे कर रहे हैं, हुक्म का मान रहे हैं, जो शरीयत खुदा ने दी थी उसके हुक्म को Maria, are you there? तो लिखा था कि बुत बनाना। देखना है कि कोई, यस सर, आई एम हियर, कैन यू हियर मी? Yeah, ये you were सारी cutting it. चीजें बनाना जो है वो गुनाह है। छवि बनाना, बुत बनाना जो है गुनाह है, लेकिन फिर भी उसकी माँ ने ये बनाने का हुक्म दिया। यहाँ पे कोई शरीयत, ये कानून नहीं है जो खुदा से वाबस्ता करता। अभी कानून सिखाना और शरीयत की बातें बताना, ये तालीम देना जो है
ये किसी नबी का काम नहीं था, ये काम जो है प्रीस्ट का था, जो खुदा की तरफ से ममसूद था, खुदा की तरफ से जो है वो मुकर्रर किया होता। लेकिन उस वक्त कोई नहीं था, इसलिए उन इसराइल में से किसी को भी नहीं बताया गया इसके बारे में। All right. So look what happens now. So this Micah guy, he had a shrine. He made an ephod. An ephod is the breastplate that the high priest wears. So he's essentially made a high priest garment. He has household gods. And he ordained one of his sons who became its priest. Micah has no idea what the law says. And he says, hey, we'll just make our own little temple right here. And I'll make one of my sons the priest. And then here's the reason. And here's the secret. Sorry. In those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. And so Kenneth sets up the book of Judges with this. This is how he's going to summarize the book. There's no king in Israel. Everyone did what was right in their own eyes. Now, why would not having a king be the big deal? Why would that make it where everybody did what was right in their own eyes? Well, look at where the prophetic history is going. We have the rest of Judges, and then we're getting Saul as king. But then we're going to get David as king. And in chapter 7 of 2 Samuel, we get the famous covenant between God and David. David becomes the type of the Messiah. They don't have a Messiah in their thinking yet. But remember, Kenneth is writing, David is 1000 BC. 1000 BC is when David is. Kenneth is writing at the end of Second Kings. He's after the fall. So Kenneth is alive around 550 BC. And by 550 BC, there is the prediction of the Messiah out of Isaiah. We got the coming restoration of the kingdom in Jeremiah and Ezekiel. So they're fully aware of what God's doing. And what Kenneth is saying is the kings are a foreshadowing of this coming Messiah, and that David is this hint of what the Messiah will be like. And he makes this explicit here. In those days, there's no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. One of the functions of the Messiah will be teaching us the law. Remember what Jeremiah says, the prophet Jeremiah, in chapter 31. He said, no longer will they teach each other the law, for they will all know the law, from the least of them to the greatest, because the law will be written on their hearts. That's Jeremiah 31. And that's one of the functions that the Messiah is going to do, is make sure we know the law and we keep the law. Maria? हम देखते हैं कि मिका ने क्या किया था कि वो जो उसने बुत बनाया था 10 चांदी के 200 सिक्के लेकर उनका ढालने वाले को दिया। उन्होंने ये कहा कि हम अपने घर में ही जो है ना एक मुकद्दस बारगाह बनाते हैं, जो खुदावंद के लिए पेश करते हैं, जिसमें चढ़ावे और नजर चढ़ाते हैं, ये हम घर में ही अपने बनाते हैं। मिका ने क्या किया, एक बूथ खाना वहां पे अपने पास ही बना लिया और अफूद और तेराफीन को बना अपने घरों में से एक को मखसूस किया जो उसके यहाँ काहिन यानी घर के उसने अपने इबादत खाना बनवाई। और हम ये सारी हिस्ट्री देखते हैं कि 550 जो है वो बीसी के अंदर ये सारे नबी आते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम देखें कि जब यीशु की पैदाइश होती है तो 1000 बीसी के करीब होती है। हम देखते हैं ये किस तरफ सारा इशारा था कि पहले साउल जो है बादशाह मुकर्रर हुआ, उसके बाद दाऊद बादशाह मुकर्रर हुआ, और दाऊद के बाद उसी नस्ल से उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने आना था जो कि बादशाह जिसको होना था।
Okay, so in this section, we are about, I don't know, 1200 BC, maybe 1100 BC. We're getting towards the end before the king comes. And what I want you to see is that Kenneth is hinting at the Messiah. He's not stating it explicitly, he's hinting at it. But before that solution can come, he has to lay out the problem. And he's really going to hammer this. Everyone did what was right in his own eyes. And that's the nature of it. So let's finish the story. So, same story, but we're changing to a different place because we're going to come back to Micah. But there's a young man in Bethlehem. Now remember, Micah's up here. Now the story's shifting to Bethlehem. Now remember, Bethlehem is where David's going to be from. But so he's going south of Jerusalem to Bethlehem. Okay. And there was a young man of Bethlehem in Judah, of the family of Judah, who was a Levite, and he sojourned there. And the man departed from Bethlehem in Judah to sojourn wherever he could find a place. He couldn't live in Bethlehem. It's a little tiny village, and there wasn't room for him. So he goes to look to find a place to live. And as he journeyed, he came to the hill country of Ephraim, to the house of Micah. And Micah said, "Where you come from?" He says, "I'm a Levite of Bethlehem in Judah, and I'm going to sojourn where I might find a place." Now remember who the Levites are. They are the sons of Levi, which is what Moses is. It's what Aaron is. And it's where the Levites are where the temple workers come from. The priests are one set of Levites, and the rest of the temple workers are the other Levites. So when Micah hears that this young man is a Levite, he gets all excited. Oh, wow, I can get a legitimate priest for my little temple that I've made. And Micah said to him, "Where you come from?" To the Levite, he says, "Stay with me and be to me a father and a priest, and I'll give you 10 pieces of silver a year and a suit of clothes, and you're living." And so the Levite went in, and the Levite was content. He was happy to dwell with the man, and the young man became to him like one of his sons. And Micah ordained the Levite, and the young man became his priest, and he's in the house of Micah. And then Micah said, "Now I know that Yahweh will prosper me because I have a Levite as a priest." Remember what I told you? They don't know the law. And here's this Levite who should know the law. He's raised in the tribe of Levi. He should be very familiar with the law. He should know better. And yet he's cooperating with this, letting himself be ordained as a priest. Go ahead, Maria. हम देखते हैं कि ये सारी स्टोरी जो कि इफ्राइम की हमने देखी है कि ये शख्स जो है जो कि मीका था, ये किस तरह से ये सारी स्टोरी एक दूसरे बादशाह की अक्कासी करती है। यहाँ पे होता क्या कि हम देखते हैं पहली आयत में लिखा है सेम इसी तरह से जैसे लिखा था कि ये जो है मीका जो है इफ्राइम के एक इलाके का बाशिंदा था। हम देखते हैं अगर हम 7 आयत में देखते हैं कि वही शख्स जो है बैतलहम के इलाके का एक और शख्स था, और 10 या 12 BC में हम देखते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद होनी तो क्या होता है, जब उसने बादशाह मुकर्रर होना था तो मीका जो है, क्योंकि ये कोई प्रॉफिट नहीं था, लेकिन उसने जो शख्स अपने घर के एक छोटे से इबादत खाना में अपने छोटे से जो है वो पाकिस्तान में लिखा था, जब उसने देखा कि वो शख्स एक लावी है तो उसने उसको अपने पास रख दिया। क्योंकि ये तारीख जानता था कि लावी की जो हिस्ट्री है, तारीख है, वो सारे खुदा के चुनिंदा बुजुर्गान जब जैसा कि मूसा जो था वो भी
लावी की नस्ल था, खुदा के चुने हुए जो खुदाम थे वो लावी की नस्ल से। इस तरह हारून जो है वो भी लावी की नस्ल से था। इस तरह से दूसरी नबी भी जो है लावी की नस्ल से। जब उसने ये देखा कि ये जो प्रीस्ट है जिसको वो अपने यहाँ रखने को है, अपने छोटे से इबादत खाने में रखने को है, वो भी लावी है, तो उसने उसको अपने यहाँ रख लिया क्योंकि वो उसकी सारी तारीफ जानता था। और हम ये देखते हैं कि उसने जो है ये सारी बातें लिखी। और उस शख्स मीका के यहाँ एक बुत खाना था और उसने एक अफूद और तराफीम को बनाया, अपने बेटों में से एक को मखसूस किया जो उसका काहिन है। उन दोनों में इसराइल में कोई बादशाह न था और हर शख्स उसकी नजर में अच्छा मालूम होता था। और बैतलहम यहूदा में यहूदा के घराने का एक नौजवान था जो लावी था, ये वो भी टिका हुआ था। आप देखते हैं कि ये भी बैतलहम के घराने का था, वहां से ही नबी पैगंबर ने आना था और वो भी यहीं का था और लावी था, यानी कि मखसूस नस्ल में से था जहां से जो है काहिन कहानत की खिदमत के लिए जो है वो मखसूस होते हैं। अब उसने जो शख्स अपने लिए चुना था कि मेरे यहाँ रहे, वो भी यहूदा में से था और बैतलहम के जो है इलाके के साथ साथ था, जो खुदावन की तरफ से चुना हुआ होता है, जो कि कानून को जानता है और जो इबादत कर सकता है, कुर्बान का पेश कर सकता है। क्योंकि हर कोई इबादत के लिए मखसूस नहीं होता, सिर्फ लावी की नस्ल जो थी वो खुदा के काम के लिए और ये सारी चीजों के लिए मखसूस थी कि वो ही खुदा का काम करेंगे। और खुदा की हैकल में सारे जो जितनी मखसूस चीजें हैं पाक हैं, वो सारी जो है वो लावी की नस्ल के लोग ही करेंगे। So now the story is going to switch again. It's the same story, but it's another chapter. And he goes, and he opens, notice how Kenneth opens it up. In those days, there was no king in Israel. So he's really stressing that Israel needs a king. A king is a good thing. Now, remember, when Kenneth is writing, he's not 1,000, he's 700 years later. And the king in Israel has already proved to be a disaster because they led Judah into exile. So he knows better about the king, but he also knows about the coming Messiah. And that's what he's setting up. The king is supposed to be a type of the Messiah because the earthly kings that we have in Judah and in Israel were usually failures, does not negate the coming Messiah. And that's what he's looking forward to. Remember, Kenneth is a prophet, not a priest. And he's looking forward to that Messiah. But he goes, and those there is no king in Israel. And then he's talking about the tribe of Dan. Now, Dan was assigned this territory, which is right next to Ephraim, but they could not take it. The Phoenicians, which is too strong, and Dan was not able to occupy their territory. So they were seeking for a place to dwell since they couldn't take the inheritance. So they sent 5 people to spy out the area. And they came to the hill country of Ephraim, and they found the house of Micah. And they stayed there, these 5 spies. And when they were by the house of Micah, they recognized the voice of the young Levite. Not because they knew him, but they recognized his accent. You're not from Ephraim, you're from down south. And they said, well, what brought you here? He says, Micah hired me to be his priest. And they said to him, inquire of God, please, that we may know whether the journey on which we're setting out will succeed. And the priest said to them, go in peace. The journey on which you go is under the eye of the Lord. So he prayed. And the men came, they came and they went to Laish. Laish is Dan. The name of that city was Laish. So they went way up north, spying everywhere to try to find a place. And they ended up going above where all the other tribes were
and they found this place up here. And Kenneth makes it very clear. These were peaceful people. They weren't bothering anybody. They're not Israelites, but they're not bothering anybody. They're quiet, unsuspecting. They're very happy there. It's a prosperous land. And they're fine. But the brothers came back to the Danites down here and said, hey, this is a great place. Let's go possess it. They're not even suspecting anything, and we can take it. It'll be a great place to settle. So the 600 men of the tribe of Dan, armed with weapons of war, set out, and they came to Kiriath Yearim in Judah, which means they came down here. And they passed on from there to the hill country of Ephraim and came to the house of Micah. The point is, the Danites are going to conquer Laish, a town way up north. And they go by Micah, and they hire the Levite out from under Micah. They hire him as their priest, and essentially saying, would you rather be the priest of one house or to a whole tribe? He said, I'd rather do the whole tribe. And they take it, and he took the ephod and the household gods, stole them from Micah, and left with them. And Micah's chasing after him, say, hey, you stole my stuff. And the Danites say, I would go back. If you don't, we're going to hurt you. And so he does. And Micah saw that they were too strong, and he turned and went back home. So the rest of the story is how they captured Dan. And Dan, Laish, they go up north, Laish, they capture, and they rename it Dan after themselves. And you can go visit Dan even today. I will show you a picture of Dan. This is Dan. That's the throne that the mayor sits on. Oh, no, it's not. It's this is the altar of Dan. This is the wall of Dan. More of Dan. So, city of Dan is still there. This is outside the wall. And it's a little platform where there'd be a chair where the mayor of Dan, what the Bible calls the king of Dan, would sit. And this is the city, and it's Dan at this point. This is where the Danites dwell. So the city's there. And more of they had their own temple and stuff. I'll remind you that later, after the separation of Israel from Judah in the 900s, they're going to build a temple in Dan. And here's the base of that temple that they built in Dan. The Israelites did this. It wasn't a pagan temple. It was a temple to Yahweh. Mind you, they're not supposed to do that, but they did it anyway. But we're back to the problem that nobody knows the law. All right, Maria, I'm sorry if you can translate or catch it up. हम देखते हैं कि दान, जिसका पहला नाम जो है लाइश था, ये दान जो है ये उन्होंने पता करने के बाद नाम लिखा। यहाँ पे क्या होता है कि उन दिनों में इसराइल में कोई भी भाषण होता और दान के कबीला अपने रहने के लिए मिरास ढूंढता था, क्योंकि उनको इसराइल के कुल में मिरास नहीं मिली थी। तो फिर क्या होता है कि बलिदान अपने सारे शुमार में से 500 गुरमाओं को
सुरा इस साल से रवाना किया ताकि मुल्क का हाल दरियाफ्त करें। जब उन्होंने अपने पास से जासूस भेजे तो क्या होता है कि वो जाके इब्राहिम के कोस्तान में उनके मिका के घर आते हैं, जहाँ पे वो लावी भी था। जब वो वहां उतरते हैं तो क्या होता है कि मिका के घर पहुंचे तो उसने उस लावी जवान की आवाज पहचानी, क्योंकि उनको पता चल गया कि हालांकि वो उनको शनाख्त नहीं कर सकते, पहचानते नहीं थे, लेकिन उसकी आवाज से उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये यकीनन कोई काहिन मालूम होता है, क्योंकि इसका कहानत का काम होगा जब भी वो यहाँ। तो फिर वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ पे कौन लाए, क्योंकि तुम तो लावी हो और यहाँ पे तुम्हारा क्या काम है। तब वो जो काहिन है वो कहता है कि मीका ने मुझे यहाँ ला के रखा, और यहाँ पे वैसे तो मैं काहिन हूँ, लेकिन मुझे नौकरों की तरह यहाँ रखा है। तो वो जो जासूस होते हैं वो मीका से कहते हैं कि तेरे लिए बेहतर क्या है कि तू सिर्फ एक खानदान का काहिन हो, या ये ज्यादा बेहतर है कि तू बहुत सारे लोगों के लिए काहिन हो, हमारे साथ चल और हमारा काहिन बन, और खुदावन तुम्हारा सफर मुबारक करेगा। तो वो काहिन जो होता है, जो मीका के घर में रहता है, वो चला जाता है। और यहाँ पे जो जो 5 शख्स निकलते हैं देश में आते हैं, उन्होंने वहां पे लोगों को देखा, और सिदानी की तरह उन्होंने देखा कि लोग कितने इत्मीनान से यहाँ रह लगे हैं, कितना सुकून है यहाँ पे, और अमन और चैन है, कोई जंगल जगह नहीं है। तो बहुत खुश होते हैं। तो फिर वो कहते हैं किसी बात में तू हमें परेशान करता है, क्योंकि तू आराम से यहाँ रह सकता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, सुरा और इस्ताल से अपने भाइयों के पास लौटते हैं, और अपने भाइयों से पूछते हैं कि तुम क्या कहते हो। उसके भाई ये कहते हैं कि चलो हम जो है इस मुल्क के लोगों पर चढ़ाई कर लेते हैं, उनको फतह कर लेते हैं, इनके साथ जंग करते हैं, क्योंकि ये मुल्क हमने देखा है और ये बहुत अच्छा है। फिर क्या करते हैं कि वो मुतमईन होकर कौम के पास वापस जाते हैं, और कहते हैं, उन लोगों को बताते हैं कि ये जो मुल्क है लाइश जिसका नाम है पुराना, कहते हैं कि ये बहुत अच्छा और पुरसकून है, इत्मीनान है, यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है, हमें इससे फतह कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं। तब ये जो दान के लोग हैं 600 मर्द जंग की हथियार बांधते हैं और सुरा अस्ताल से रवाना होते हैं, और फिर जाकर यहूदा और उसके सारे उससे जंग करते हैं। अब ये उन दिनों का वाक्य है जब यहूदा जो है मैदान से अलग नहीं हुआ था, ये उस दौर की बात है। तो उनमें क्या करते हैं कि वहां से चलकर इब्राहिम के कोस्तानिक मुल्क को पहुंचते हैं और मीका के घर आते हैं। तब वो पांचों मर्द जो होते हैं वो आके मीका के मुल्क का हाल दरियाफ्त करते हैं, और उन्हें कहते हैं कि इस घर में एक अपूद और तराफीम भी है, और एक खुदा हुआ बुत भी है। तो अब सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तब वो उस तरफ मुड़ जाते हैं और उस लावी जवान के मुकामी यानी मीका के घर में दाखिल होते हैं, और उससे खैरियत पूछते हैं। और वो 600 मर्द जो बनीदार में थे जंग के हथियार बांधे फाटक पर खड़े रहे जब तक कि वो नहीं आते। फिर क्या होता है कि वो आकर खुदा हुआ बुत और अफूद और तरफीम और ये सब कुछ जो है काहिन के फाटक पर इन 600 मर्दों के साथ जो जंग के हथियार बंधे हुए थे खड़ा हुआ था। जब वो मीका के घर खुदा हुआ बुत और तरफीम और ये सब कुछ देखते हैं, तो वो काहिन से कहते हैं तुम ये क्या करते हो। तब वो उनसे कहता है कि चुप रहे, मेरे मुंह पर हाथ रख और हमारे साथ चलो, हमारा बाप और काहिन है, यानी वही काहिन जिसको जो है मीका ने अपने पास रखा होता है, उस शख्स को कहते हैं कि तुम्हारे साथ चलकर हमारा काहिन बन। वो बार बार उसे कहते हैं कि एक शख्स का काहिन और एक घराने का काहिन मुझे बेहतर है कि तू सारे बनी इस्राएल पर हुकूमत कर। तब काहिन बहुत खुश होता है और वो कहता है कि ठीक है, ये तो अच्छा है, मैं इनके साथ चला जाता हूँ, और वो इनके पीछे हो लेता है। Okay, so we did this. Now, part of that thing with the tribe of Dan is that they conquered the territory to a people who had done no wrong. They hadn't bothered the Israelites. They were just minding their own business. And Dan came in and conquered them. And then it becomes later, it becomes the site of an illegitimate temple.
And Kenneth is setting the stage for that. And they're not, Dan's gonna be a problem city. And then we get the last section of the book of Judges. In those days, when there was no king in Israel, notice how he sets it up with that same phrase. When there was no king in Israel. So everybody's doing what's right in their own eyes. A Levite from Ephraim took a concubine from Bethlehem. So same two places, but different people. So you got a Levite from up here who comes down to Bethlehem and gets a wife. A concubine is a second wife. And she was unfaithful to him. And she went back to her father's house in Bethlehem. And he, the Levite, gets up and goes to get her. He wants to speak kindly and win her back. And he talks to the father, tries to win back, and he ends up staying several days. And they drink and eat every day. And when it was time to leave, because the father-in-law's agreed to have his daughter go back with him, when it's time to leave, they would drink some more, and the father would talk him into spending the night. And so they did this day after day. But finally, the Levite said, "No, I'm going to leave now." And he says, "I'm leaving now." And he got up, takes his concubine, and he heads north. And he heads north from Bethlehem. He makes it as far as Jerusalem. Now, Jerusalem was not called Jerusalem. It was Jebus. It was a city occupied by the Jebusites, who are not Israelites, not Judahites. So they're foreigners to it. And when they're coming close to the city, his servant said, "Look, it's getting late. Let's spend the night here." And the Levite goes, "No, this is a city of foreigners. We're going to go on to Gibeah." So they go north up to Gibeah. Well, I'll put Gibeah up here for you. So they says, "No, we're going to press on from Jebus and then make it up to Gibeah." All right. Now, Gibeah, as it turns out, is later going to be the hometown of Saul. And Kenneth is making a point by having them go to Gibeah. Because when they're at Gibeah, it's like Sodom and Gomorrah all over again. They spend the night. They're in the square of the city. Somebody takes them in, says that you really don't want to be spending the night out in the square. And he takes them in. And while they're in there, as they were making their hearts merry, behold, the men of the city came, surrounded the house, beating on the door. "Bring out this man that we may know him." Remember, know is the Hebrew way of saying have sex with. So they want to attack the Levite. They want to rape him. But the owner of the house has a duty, according to the rules of hospitality, to protect his guest. So he says, "Here, I have a virgin daughter and this guy's concubine. Let me take them out, and you can do with them what seems to you. But don't do anything to this man." So we have, what an awful situation. They're willing to give up their virgin daughter and his concubine to avoid him getting attacked. That's not the way we think that, well, I don't know. And we wouldn't do that in the United States. Sacrifice the daughter to save the dad. That's not how that would work. But in this world, they would.
Now, they do it, they send the girls out. And when let's pause here. Maria, translate up to here. फिर आगे की जो स्टोरी होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि इसराइल में उन दिनों में कोई बादशाह नहीं था। तो ये लोग क्या करते हैं कि उस लावी और फ्रैंक के कुस्ताइन जो एक से रहते बैतलहम यहूदा से हुरम अपने लिखी। ये वाइफ नहीं, हुरम जो लेडीज एक साथ देते थे, हुरम अपने साथ देते हैं। तो क्या करते हैं, उसकी हुरम जो है उसके पास जब बैतलहम में अपने बाप के घर चली गई और 4 महीने वहीं रही। फिर क्या होता है कि उसका शौहर पर एक नौकर और 2 गधे उसके पास पीछे रवाना होते हैं उसे मनाकर वापिस गया था। जब वो अपने बाप के घर में फिर आती तो उस जवान औरत के वापस देखकर उससे मुलाकात करता है और खुश होता है। और उसका ससुर जो है उस जवान औरत के बाप ने उसे रोक देता है कि तू यहीं रह उसके साथ 3 दिन तक। उन्होंने खाना खाता है और फिर वहीं वहीं रुक जाते हैं। अब क्या होता है कि दान जो कि वो मुल्क था, वहाँ के लोगों ने इसराइलियों के साथ कोई दुश्मनी नहीं की थी, ना वो लड़ते थे। फिर भी उन्होंने दान पर कब्जा किया, उसको जो है फतह कर लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है कि चौथे रोज जब वो सुबह उठते ही हैं, चलने को खड़ा होते हैं, जवान औरत के बाप अपने दामाद से कहता है कि अभी नहीं जाओ बल्कि यहीं रहो। उसे जिद करके अपने पास फिर से रोक लेता है उसकी हुरम का शौक। तो यहाँ पर फिर क्या होता है कि फिर दोनों बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं। फिर जो है जाने लगता है, उसका सफर से फिर रोक लेता है। यहाँ पर फिर क्या होता है कि जब वो वहां रात काटने को होते हैं, 5वां रोज होता है, सुबह सवेरे उठते हैं, तो उस जवान औरत के बाप ने उससे कहा कि खातिर जमा रख, अब तो दिन ढला है। तो फिर 5वें रोज फिर उसे अपने पास रख लेते हैं। फिर वो शख्स देखता है उसकी हिरम और उसके नौकर चढ़ने के लिए जब खड़े होते हैं, तो फिर जो है उनको जिद होते हैं कि अभी आप यहाँ हमारे पास फिर रुक जाएं। अब वो शख्स फिर राजी होता है, ठीक है हम एक रात फिर रुक जाते हैं। अब यहाँ पर यबूस के सामने जब पहुंचते हैं, यबूस, तो क्या होता है कि 2 गधे उन्होंने जैन कसी होती है, उसकी हुरम उसके साथ होती है। यहाँ पर क्या होता है कि यबूस के बराबर पहुंचते हैं तो दिन बहुत ढल चुका होता है। तो नौकर जो होता है अपने आका से, यानी कि वो इब्राहिम से कहते हैं, निकाह से, कि तू जो है यबूसियों के शहर में मुड़ जाए, यहाँ जो है नहीं टिकते, हम यबूसियों के पास चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ टिकना जो है सही नहीं होगा। तो फिर वो कहता है ये तो एक अजनबी शहर है हमारे लिए, हम ऐसा ना हो कि फंस जाए, हमें दाखिल नहीं होना चाहिए। फिर भी वो अपने नौकर से कहता है कि चलो हम यहीं चले जाते हैं, कि रात यहाँ काट देते हैं और जब दिन चढ़ेगा तो फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। वो आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या होता है कि बिन्यामीन के एक जुबा के नजदीक पहुंचते हैं तो सूरज डूब जाता है। जब वो उठकर मुड़ते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है हम जुबा में दाखिल हो तो वहां टिके, और वहां दाखिल होकर शहर के चौक में बैठ जाएंगे, क्योंकि वहां कोई आदमी अगर हमें अपने घर ले जाता है, साथ ले जाता है, तो हम उनके उनके हाथ स्टे कर लेंगे, रुक जाएंगे। और शाम को क्या करेंगे कि जब वो अपना काम कर लेंगे तो फिर निकल जाएंगे। तो वहां पे जो इब्राहिम में रहने वाला एक शख्स गुजरता है, वो क्या करता है, कहता है कि मुसाफिरों को देखता है तो वो जिद करता है कि तुम हमारे यहाँ ठहर जाओ, क्योंकि ये दस्तूर था। जब किसी ने मेजबानी करनी होती थी तो जो कई मेहमान अगर फाटक पे बैठा होता था उसे अपने घर ले जाते थे, उनकी मेजबानी करते थे, उनके साथ अच्छा सलूक करते। तो वो इससे पूछते हैं कि तू कहाँ से आया। तो वो कहता है कि हम यहूदा के हम इब्राहिम की कोस्तानी मुल्क से आए हैं, और मैं भी वहीं का हूँ। फिर क्या होता है कि यहाँ वो जो है उसे बताता है कि यहाँ कोई हमें अपने घर नहीं टिकाता, इसलिए हम फाटक पर रुक गए हैं। फिर वो उन्हें कहता है कि तुम अपने गधे ले आओ, हम तुम्हें चारा भी देंगे, और तुम्हारी लौंडी के वास्ते जवान के लिए जो तेरी बंदों के साथ है रोटी और मैं भी देंगे, और तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं आएगी। फिर वो क्या होता है कि इस चौक पर हरगिज नहीं टिकता, उसके साथ चला जाता है। जब वो उसके घर जाता है तो फिर क्या होता है कि अ, जब वो मैं पी रहे होते हैं, पानी वानी पी रहे होते हैं,
सारी चीजें खा रहे होते हैं, तो उस शहर के जो मर्द होते हैं वो जो है जिद करते हैं कि तू उस हुरम को और ये सारे जो तेरे साथ हैं इनको बाहर निकाल, ताकि हम इनके साथ बुरा फेल कर सके, क्योंकि वो जिस शहर में टिके थे वो बहुत बुरे अमल करने वाला था, जैसे कि सदूम और अमूरा है, उनके काम बहुत गलत थे। उन्होंने देखा कि अजनबी हमारे दरमियान है, तो उन्होंने भी दरवाजा खटखटाया, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को बाहर निकालो ताकि हम उनके साथ भी गलत काम कर सकें। अब क्या होता है कि जो शख्स उन्हें अपने घर लेके जाता है वो उनसे कहता है कि नहीं ऐसे ना करो, ये तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि ये जो शख्स मेरे घर आया है ये मेरा मेहमान है, तुम्हें इसके साथ ज्यादती नहीं करनी। अगर तुम्हें ऐसा फेल करना ही है तो मेरी कमारी बेटी जो कि कमारी है, जिसने भी शादी नहीं की, वो उनको बचाने के लिए यहाँ तक कहता है कि तुम उसको ले जाओ और उसके साथ जो करना है करो, लेकिन इन शख्सों को जो कि मेरे लिए मेहमान है, मेरे बाइज्जत है, तुम इनके साथ कुछ ना करना। इतनी बड़ी बात। अगर सर डॉक्टर वंश ये बता रहे थे कि अमेरिका के अंदर भी हम कभी भी अपनी कवारी बेटी किसी को ना दें, लेकिन ये एक शख्स ने बहुत बड़ी बात कही अपने मेहमानों को बचाने की। और वो से इतना भी कहा कि जो है अपनी हुरम को जो उसके साथ थी उसको बचाने के लिए, हालांकि वो उसकी वाइफ में थी, हुरम थी, फिर भी उसने उसको बचाने के लिए और अपने मामलों को बचाने के लिए ये सब कहा कि अगर तुम्हें एक गलत काम ही करना है तो मेरी कुंवारी बेटी को ले जाओ, लेकिन उनके साथ कुछ ना करो। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो मर्द उसके साथ फिर भी जो है वो ज्यादती करते हैं, उसकी हुरम को पकड़ के उसे बाहर ले आते हैं और उसके साथ इतनी बदसलूकी करते हैं, उसके साथ बुरा सलूक करते हैं, बुरे अमल करते हैं, इतने ज्यादा कि वो औरत जब सूरज निकलने वाला होता है तो वो पड़ी रहती है, वो हिल नहीं पाती। अब जब वो शख्स दरवाजे के अंदर दाखिल होता है, उसका शौहर जो है सुबह को जब उठता है तो वो क्या देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन क्या होता है कि वो कहता है कि चलो दरवाजा खुला है, अब हम जाते हैं, रवाना होते हैं। लेकिन उसकी जो हुरम होती है वो हिलती नहीं। जब वो देखता है और उसे आवाज देती है कि हम चलें, तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता। जब वो गौर करता है तो क्या देखता है कि वो औरत जो है वो मरी हुई और वो आवाज नहीं पाती। ये देखता है कि इतना बुरा सलूक उसके साथ किया गया है। Okay, so the next morning, the Levite wakes up, and there's his wife, his concubine, on the ground, laying out, and her hands are on the threshold of the door, like she was trying to get in and couldn't, and she's dead. And he picks her up, and they leave, and he makes it home back in Ephraim, and he cuts her up into 12 parts, her body, and he sends it to the 12 tribes and says, "This is what Benjamin, specifically Gibeah, has done. Is anything like this ever been done in Israel before?" And they go, "No." And so do something about it. And so this starts a war with Benjamin. And where Israel is going to destroy Benjamin. And they stopped short of destroying him. The Benjaminites are almost wiped out. And the Lord defeated Benjamin before Israel, and the people of Israel destroyed 25,100 men of Benjamin that day. And so now the tribe of Benjamin is almost wiped out. And they said, well, we can't have that. And so they come up with an idea of providing wives for Benjamin, where essentially they'll hold a dance and the male members of the tribe of Benjamin can sneak out of the woods and grab a bride and take her home. It's a bizarre story, but that's what they do to save Benjamin. Now, what I want you to see is Gibeah is where Saul, the future king, is going to come from. And so, what this story is doing is explaining who the Gibeahites are. So, this is where Saul comes from without ever saying that, because Saul doesn't show up
until the next book. But he's making a point, Kenneth is, about the tribe that Saul is from, judging them without actually saying anything. So, and this is how the book ends. In those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. That's the way we started off this section, which was that verse. So he's setting the stage because the next thing is the book of Samuel. Kenneth's going to talk about the rising up of kings in Israel. And that's how Judges end. So Judges, it's about how bad things have gotten. The Benjaminites are Israelites, and they attacked it. They behaved just like Sodom and Gomorrah. That's how bad things have gotten because they do not know the law. They do not keep the law. The priests have really failed in their jobs, and we have Levites becoming priests in temples that aren't temples in people's houses. And it's just, that's how corrupt Israel and Judah have become. They don't know the law, they don't practice the law. And that is setting the stage for the coming of the king. And that's how I'll end it. Go ahead, Maria. यहाँ पर क्या होता है, आपने देखा कि जब उसकी वाइफ ने उसको जवाब नहीं दिया, उसने बिल्कुल हाथ ऊपर उठाए थे जैसे वो दरवाजे से निकलने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने क्या किया कि उस अपनी हुरम को लेकर उसकी लाश को उठाया और अपने गधे पर सवार करके वापस अपने कबीले में लेके जाता है। तो उसकी लाश के जो है 12 टुकड़े करते हैं, सारे हिस्सों के 12 टुकड़े करते हैं, और 12 टुकड़े करने के बाद इसराइल के 12 कबीलों में भेजता है और उनका साथ ये कहता है कि ये 12 टुकड़े देखो, ये क्यों भेजे गए हैं? इसलिए कि जहां पर वो ठहरा था अबूस में, वहां पे लोगों ने उसके साथ क्या किया। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे सदूम और अमूरा के लोग थे। और ये बेचते उनसे कहता है कि क्या तुमने इसराइल में ऐसा फेल कभी देखा? वो उसे कहते हैं कि नहीं। तो फिर ये कहता है कि हम मिलके जंग करेंगे उन सारे लोगों के साथ, बिन्यामीन के कबीले के साथ। फिर यहाँ पे सारे लोग मिलकर बिन्यामीन पर चढ़ाई करते हैं और उन सबको जो है मार देते हैं। ऐसा फेल जो उन्होंने उसकी हुरम के साथ किया था, उसकी वजह से वो सारे मर्दों को, सारी उसकी जो है नस्ल होती है उसको तबाह कर देते हैं। उसको बताते हैं कि ऐसा फेल जो है बिन्यामीन कबीले ने हमारे साथ किया। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा ये मीका को ये बताना चाहता है कि यहाँ से जो है एक बादशाह पैदा होगा जो कि पहले जो है वो दाऊद और फिर उसके बाद यसु मसीह इसी नस्ल से पैदा होगा, जो हमें सारी स्टोरी पता चली है। और फिर यहाँ पे ही हम किजात की किताब का जो है एक काम देखते हैं कि यही लिखा है आखिरी आयत के अंदर कि इन दिनों में इसराइल में कोई बादशाह ना था और एक शख्स जो उसकी नजर में अच्छा मालूम होता था, यानी उनकी नजर में जो अच्छा होता था वो लोग वही करते थे। क्योंकि उसके बाद ये सारा जो तैयारी हो रही थी, ये सारा सेटअप हो रहा था, ये एक बादशाह के आने की जो है वो अक्कासी करता है। उसके बाद एक बादशाह ने आना था और ये सब होना। All right. So next week, I will not be here. I'm going to be out of town. I will be, don't feel sorry for me. I will be at the beach swimming. I'm going on vacation. So, Wow. Alone or with family? no, I'm meeting friends. About 50 of Oh, us have rented a house on the beach wow. and we're going to relax there. And Uh, so, and the following week, I'll actually be traveling back. So I missed the next 2 weeks. mm. Okay. But when we come back, we will be doing Samuel. Okay. We will be starting Samuel. Okay. Excellent. What? Yes, sir. Excellent. Enjoy your vacation. Yes, I will. Well, thank you very much. And I'll see y'all in 2 weeks, 3 weeks, I guess.
Okay? Yes, thank you, sir. Blessings.